अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आपके साथ FIA का पास्ट पेपर 2018 का शेयर कर रही हूँ, जिसमें जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये किसके लिए यूज़ होता है? अगर आपने सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन या सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर के लिए पेपर देने हैं तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सब FIA में ऐसे पेपर्स होते हैं जो कि साल में एक दफ़ा होते हैं, लेकिन उनमें क्वेश्चंस कुछ रिपीटेड होते हैं। रिपीटेड का मतलब कि वो रिपीटिंग वे में होते हैं। सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, लेकिन एक साल पहले के 10 क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। पिछले 5 सालों में से 50% पेपर रिपीट होता है और वो डिफरेंट वे में होता है। क्वेश्चंस वही होते हैं लेकिन उनको डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि हम सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन का जो पास्ट पेपर है वो कर लें, जो कि 2018 का है। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 2 डिफाइन कोड्स मीन्स द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एज। सेक्शन 2 जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर का कौन सा कोड है जो डिफाइन करता है? दैट इज़ इन 1898 एक्ट 5 ऑफ 1898, जो कानून 5 है 1898 का, वो डिफाइन करता है। Section 2 defines provincial police means the police constituted by provincial government under the Police Act is 1861। 1861 का जो आर्टिकल है जो है वो इन सब चीज़ों को डिफाइन करता है। According to Section 21 of the Pakistan Penal Code, Act XL 5 of 1860, public servants include an employee of any corporation। A is right answer। किसी भी कॉरपोरेशन का कोई भी एम्प्लॉय हो वो पब्लिक सर्वेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एजेंसी? FIA के जो एजेंसी है उसका कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है? दैट इज़ बी, यानी 3 सेक्शन जो है वो इस चीज़ को डिस्क्राइब करता है। इसमें क्या है? सेक्शन 3 में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी नॉट स्टैंडिंग विद एनी कंटेन इन एनी अदर लॉ ऑफ द time being in force, the federal government may constitute an agency to be called the Federal Investigation Agency for inquiring into an investigation of the offences specified in the schedule, including an attempt or conspiracy to commit an abetment of any such offence। The अगर कोई भी ऑफेंस होता है तो वो फेडरल गवर्नमेंट ने जो एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो बनाई हुई है इंक्वायरी के लिए। और या अगर किसी ने ऐसी कोशिश की है या किसी के साथ ऐसा ऑफेंस हुआ है तो उसकी इंक्वायरी, उसकी सज़ा जज़ा जो भी है वो FIA ही करेगी। और FIA में कौन कौन लोग होते हैं? उनका जो हेड होता है वो डायरेक्टर जनरल होता है। उसके अंदर कुछ ऑफिसर्स होते हैं जो कि टाइम टू टाइम चेंज हो रहे होते हैं। Superintendence and administration of the agency is defined in the Section 4 of the FIA Act 1974। Section 4 इन दोनों की जो है ना वो डिफाइन करता है। Powers of the members of the agency is defined under Section 5 of the FIA Act 1974। What is the meaning of capital punishment? Capital punishment का क्या मतलब है? The death sentence or penalty, यानी कि सज़ाए मौत जो है वो capital punishment है। What is the meaning of to be a dog in the manger? That means to be selfish। What is the meaning of rough and tumble? In a disorderly manner। In a disorderly manner means कि एक manner नहीं है, एक way नहीं है, proper way नहीं है, illegal है। What is the meaning of the apple of discord? The apple of discord का मतलब है the bone of contention, quarrel, a cause of strife। C। What is the meaning of tell it to the Marines? Tell it to the Marines means a dismissive response to an unbelievable story। These are the pair of words, these are the idioms। अगर आपने 9th क्लास में और उसके अलावा पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर में पढ़े होंगे idioms, तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा इनके क्या मीनिंग्स है। What is the meaning of a laconic speech? Laconic speech means a concise speech। एरर फाइंड करने हैं सेंटेंसेस में। अगर आपने ग्रामर की हुई हैं तो दैट्स वेल एंड गुड। ग्रामर, उसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस और वर्ब की फॉर्म्स तो आपको इजीली होगा। लेकिन अगर आपको नहीं है तो आप पास्ट पेपर लाजमी करें, क्योंकि उनमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट हुए होंगे। यहाँ पे फर्स्ट जो पैरा है, फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें एरर है। वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम सो थोरोली। वी डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम थोरोली, यहाँ सो नहीं आएगा। दिस इज़ बिकॉज के थोरोली का मतलब ही है कि हमने डिटेल में पढ़ लिया। फाइंड एरर, यहाँ पे एरर है। वी डिस्कस अबाउट सेम। फाइंड एरर, गोट ड्राउन इन द पैसिफिक ओशन। गोट
नहीं आएगा. ड्राउंड इन द पैसिफिक ओशन. फाइंड एरर यहाँ पे आई कुड नॉट पुट अप इन द होटल, अप नहीं आएगा यहाँ पे. फाइंड एरर आई हैव गॉट नहीं आएगा. फाइंड एरर यहाँ पे एरर है एंड नेवर यू विल गेट इट बैक. सी ऑप्शन में मिस्टेक है. फाइंड एरर ब्लॉक ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट्स. फाइंड एरर एंड हैज़ टू सी अ डॉक्टर. यहाँ पे एरर है. फाइंड एरर एंड हैज़ टू सी अ डॉक्टर. सेम सेंटेंस. इफ़ अ न्यूक्लियर वार ब्रेक्स आउट. यहाँ पे एरर है इस सेंटेंस में. सी डी. यहाँ इन सेंटेंसेस में कोई एरर नहीं है. फाइंड एरर टू टेक द इंटरेस्ट इन द स्कूल इज द एरर इन द सेंटेंस. फाइंड एरर ट्रॉय वॉज टेकन बाय ग्रीक्स. दिस इस सेंटेंस में भी एरर है. ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है. फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान इज़ कायद मोहम्मद अली जिन्ना. हु वॉज मोहम्मद अली बोगरा. मोहम्मद अली बोगरा प्राइम मिनिस्टर हैं. ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है. इवन हर साल रिपीट होता है किसी ना किसी पेपर में. What age was prescribed for president in 1956 constitution. 1956 constitution के लिए क्या एज प्रिस्क्राइब है? That is 40 years. When the constitution of 1962 was abrogated. 1962 का जो constitution है वो कब लागू किया गया? That is 20 मार्च 1969. लेकिन एग्जैक्टली 25 मार्च है, लेकिन जो काम सारे हो रहे थे वो 20 मार्च है. जो भी ऑप्शन है आप सही से करेक्ट कर दें. Who abrogated 1962 constitution and become chief martial law. That is General Yahya Khan. Who started the Frazi movement? Haji Shariatullah. In which of the following cities All India Muslim League was found? All India Muslim League जो फाउंड हुई थी वो ढाका में हुई थी. The members of Punjab Assembly are 371. Tenure of National and Provincial Assemblies. National and Provincial Assembly का दौरानिया जो है 5 साल का होता है. The Supreme Commander of Pakistan Armed Forces is President. First census was held in Pakistan in the year 1951. The largest railway workshop Mughalpura is situated in Lahore. Worship of God is a second fundamental of Islam. What is the number of fast? रोज़े का जो है वो है 4th. पहला है तौहीद और रसालत. सेकंड है फंडामेंटल ऑफ वर्शिप ऑफ गॉड. थर्ड है रोज़ा. थर्ड है ज़कात एंड 4 इज़ रोज़ा. कलमा इस्तग़फ़ार इज़ द कलमा नंबर. कलमा इस्तग़फ़ार 5वां कलमा है. नंबर ऑफ टाइप ऑफ फेथ्स आर 2. ए आंसर है. हाउ मेनी टाइम्स कलमा तैयबा हैज़ बीन मेंशन्ड इन द होली कुरान? 2 times कलमा तैयबा मेंशन्ड है. बिलीफ इज़ द लाइफ हेयर आफ्टर इज़ अ फंडामेंटल ऑफ फेथ. नमाज इस्तिखारा इज़ ऑफर्ड फॉर. यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है. नन ऑफ अबव आएगा क्योंकि नमाज इस्तिखारा करने के लिए अदा की जाती है. नमाज इस्तिस्का इज़ प्रेयड फॉर रेन. अगर बारिश हो रही हो तो बहुत ज़्यादा हो रही हो तो भी नमाज इस्तिस्का पढ़नी चाहिए. अगर नहीं हो रही हो काफ़ी देर से कहत जब पड़ जाता है खुदा न खास्ता तो तब नमाज इस्तिस्का अदा की जाती है. हु इज़ मुदर्रक. हु स्टार्ट प्रेयर विद इमाम. जो इमाम के साथ नमाज पढ़े उसे मुदर्रक कहते हैं. हु इज़ मशूक. हु कम्स आफ्टर 1 रकात. जो एक रकात के बाद इमाम के साथ आए उसे मशूक कहते हैं. नमाज तरावी इज़ सुन्नत. नमाज तरावी सुन्नत है. ज़कात लिटरली मीन्स प्योरिफिकेशन. Which important night falls in Ramadan? Laylatul Qadr falls in Ramadan. Which ghazwa was fought in the very first of Ramadan? That is Badr. Ghazwa Badr. A batsman scored 120 runs, which included 9 boundaries and 4 sixes. Which percent of his score did he makes by running between the wickets? यहाँ पे इसकी सारी कैलकुलेशन है. उसने 9 जो है वो चौके मारे और 4 छक्के मारे तो उनका स्कोर 60 बनता है और रिक्वायर्ड परसेंटेज हमारी जो है वो 50% है. According to the section 21 of Pakistan Penal Code, public servant includes an employee of any corporation. यहाँ पे error है again. यहाँ पे and has to see a doctor. कलमा तैयबा is the first कलमा. What is the name of third कलमा? थर्ड कलमे का नाम जो है कलमा तमजीद है. Which surah start without Bismillah? Surah Toba starts without Bismillah. Second migration to Habsha took place in 616 AD.
Kalma Tayyiba is the first kalma. What is the name of third kalma? Kalma Tamjeed is the name of third kalma. Second migration to Habsha took place in 616 AD. For 6 years Halima took care of Prophet. 6 साल तक हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की. Companions of Prophet at Hudaybiyah were 1400. Prophet stayed at Makkah for 15 days after its conquest. Kyoto Protocol is an international treaty relating to environmental problems. The Great Pyramid of Giza, the oldest of the ancient 7 wonders of the world, is located in Egypt. The first port of Islam is Hazrat Hassan bin Thabit. The ex-Prime Minister Nawaz Sharif was disqualified on July 28, 2017 for not disclosing his unwithdrawn salary. The Pina Palace, a UNESCO World Heritage Site, is located in Portugal. Give the fundamental belief of Islam in a proper order. यहाँ पे डी ऑप्शन है तौहीद, रसालत, मलाइका, अल्हामी कुतब और आखरत. Russia will invest 2 billion in the construction of north-south gas pipeline. रशिया 2 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट करेगी. For safety, the fuse wire used in the mains for household supply of electricity must be made of metal having low melting point. सेफ्टी के लिए लो मेल्टिंग पॉइंट बनाएंगे तो वो जल्दी अगर रोड पे गाड़ियाँ चल रही होंगी या कोई आग लगेगी तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा तो वो फटेगी नहीं, बर्स्ट आउट नहीं होगी. गोल्डन टेम्पल अमृतसर इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट गुरुद्वारा. गोल्डन टेम्पल जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट गुरुद्वारा है, सबसे बड़ा. ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 जर्मनी was in the Battle of Verdun on the Western Front and Romania declared war on the Eastern Front in the air. 1916 में जो जंग हुई थी वर्ल्ड वॉर 1. Heavy water project and fertilizer plant are famous industries of ओडिशा. ये दोनों वाटर प्रोजेक्ट और फर्टिलाइज़र प्लांट के नेम दिए गए हैं और ये दोनों प्रोजेक्ट हैं ओडिशा के. हामिद करज़ई was chosen president of Afghanistan in 2002. Durand Cup is associated with the game of football. Durand Cup फुटबॉल की गेम में मिलता है. Headquarters of UNA are situated at New York, USA. First International Peace Congress was held in London in 1843 AD. For seeing project at the surface of water from the submarine underwater, the instrument used is periscope. अंडर सबमरीन जो चीज़ें हैं सब जैसे मछलियाँ, डॉल्फिन वगैरह, इन सबको देखने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है दैट इज कॉल्ड पेरिस्कोप. डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. This is an economic grouping of third world nations. Fathometer is used to measure ocean depth. Fathometer जो ocean की डेप्थ होती है उसको measure करने के लिए यूज़ होता है. For galvanizing iron, which of the following metal is used? Lead. For purifying drinking water, alum is used for coagulation of mud particles. Hockey was introduced in the Asian Games in 1858 in Tokyo. Escape stands for FIA के जो टेस्ट होते हैं मोस्टली उनमें जो एब्रीवेशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं. Escape stands for Economic and Social Commission for Asia and Pacific. Firdausi was a poet and well known of his epic Shahnama. The word Allah is mostly used in the surah of the Holy Quran. ज़्यादातर सूरत अल-मुजद्दिला में यूज़ हुआ है. Surah Ikhlas is known as Sulusul Quran. Which surah of the Quran has the name Allah in every single words? Surah Al-Mujadila में अल्लाह का सबसे ज़्यादा लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है. हर आयत में अल्लाह का लफ्ज़ है. Synonym of corpulent is obese. यहाँ पे synonym, antonym और इंग्लिश का भी काफ़ी हद तक पोर्शन है. Synonym of corpulent is obese. Synonym of brief is short. Synonym of embezzle is
Misappropriate. Synonym of vent is opening. Synonym of August is dignified. ये अगस्त वाला synonym बहुत ज़्यादा repeat हुआ है mostly questions में. Synonym of canny is clever. Synonym of alert is watchful. Synonym of warrior is soldier. Synonym of distant is far. Synonym of adversity is misfortune. Synonym of fake is imitation. Synonym of indict is accuse. Synonym of stringent is rigorous. Synonym of lament is complain. Synonym of hesitated is paused. Synonym of rescue is help. Synonym of attempt is try. Synonym of foray is maraud. Synonym of consequences is results. Synonym of improvement is betterment. Antonym of enormous is tiny. Antonym of commissioned is terminated. Antonym of artificial is natural. Antonym of exodus is influx. Antonym of relinquish is possesses. Antonym of expand is condense. Antonym of mortal is immortal. Antonym of consents is active. Antonym of obeying is ordering. Antonym of fraudulent is genuine. Antonym of flagitious is innocent. Antonym of belied is exaggerate. Antonym of startled is relaxed. Antonym of busy is relaxed. Antonym is stale. Antonym of culpable is blameless. Choose correct spellings. करेक्ट स्पेलिंग्स भी आएंगे. एफिशिएंट के जो सही स्पेलिंग है यहाँ पे. ट्रीटमेंट के ट्रीटमेंट है. बेटरमेंट के भी सही नहीं है. एम्प्लॉयड के भी सही नहीं है. यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो एफिशिएंट के हैं. चूज़ करेक्ट स्पेलिंग. फॉरेन. अच्छा यहाँ पे सबसे जो सही स्पेलिंग है वो ए ऑप्शन है. चूज़ करेक्ट स्पेलिंग. ओमिनियस यहाँ पे सी में है. ओमिनियस. Right answer is C. Choose correct spelling. Passenger B is the right option. Correct spelling. Benefited C is a right option. Choose correct spelling. Treacherous D is the right option. Choose correct spelling. Forecast में D is the right option. Choose correct spelling. Rigorous में D is a right option. C. Plate is a right option. Choose correct spelling. Bouquet. C. Bouquet. Bouquet. Choose correct spelling. Veterinary. D is a right option. Choose correct spelling. Chancellery. B is a right option. Choose correct spelling. Excessive A is a right option. Choose excessive A is a right option. Choose correct spelling. Indispensable D is a right option. Choose correct spelling. Humorous is correct option. The national anthem of Pakistan is written by Hafiz Jalandhari. Who chose the name of Pakistan? Chaudhry Rahmat Ali. A total of dash amendments to the Constitution of 1973 have been passed by the Parliament. 24 amendments जो हैं वो 1973 के Constitution में पास की गई थी. 22nd amendment in 1973 Constitution of Pakistan is related to power of election commission members. Jinnah, the only film on the life of Qaid Azam, was produced by Akbar S. Ahmed. Jinnah, the only name the cricket stadium which is located in Khyber Agency and inaugurated by General Raheel Sharif in November 2016. It is Shahid Afridi Cricket Stadium.
Who is the current Chief of Army Staff, Pakistan? General Qamar Javed Bajwa. Who is the current Chairman, Joint Chief of Staff Committee? That is General Zubair Hayat. Newly selected Army Chief Qamar Javed Bajwa belongs to, that's not newly, 16 Baloch Regiment. Pakistan Army on launched Operation Radadul Fasad across the country on 22nd February 2017. Labor Day is observed on 1st May. Chief of Army Staff General Qamar Javed Bajwa was awarded a Line of Merit for promotion of defense ties between Pakistan and Turkey on 20th June 2017. Legion of Merit की जो शील्ड थी वो दी थी. Prime Minister of Pakistan is लियाकत अली खान. सबसे ज़्यादा इन्होंने हुकूमत की पाकिस्तान पे. The Friendship Gate is built on the border of between Pakistan and Afghanistan. Which reform introduced separate electorate for Hindus and Muslims? That is Minto-Morley reforms. Who is the father of geometry? Euclid. What is the common between Kutte, Shankar, Lakshman and Sudhidhar? That is drawing cartoons. Who was known as Iron Man of India? That is Sardar Vallabhbhai Patel. Who was known as Iron Man of Pakistan, India? The Indian to beat the computers in mathematical wizardry is Shakuntala Devi. Jude Felix is a famous Indian player in which of the fields? Hockey. Who among the following was an eminent painter? That is Sarada Yukil. Professor Amartya Sen is famous in which of the fields? Economics. Which of the following was Satyajit Ray associated with film direction? Satyajit Ray is with film direction. Dr. June Liu of Korea, the recipient of International Gandhi Award, is known for his service in the eradication of leprosy. Amjad Ali Khan is associated with which of the following musical instrument? Amjad Ali Khan sarod के साथ associated थे. Guru Gopi Krishna was a maestro of which of the following dance form? That is Kathak. Miss Bachendri Pal had undertaken a unique expedition for focusing attention on which of these? Spirit of adventure. Which of the following field Nageshwara Rao is associated with? Motion pictures. Jamini Roy was a famous painter. In which field Ashan Maharaj has distinguished himself? That is dance. Ordinary table salt is sodium chloride, what is baking soda? Baking soda is sodium bicarbonate. Ozone hole refers to decrease in thickness of ozone layer in stratosphere. Pine, fir, spruce, cedar, larch and cypress are the famous timber-yielding plant of which several also occur yearly in the hilly regions of India. All this belongs to gymnosperms. Pollination is best defined as transfer of pollen from anther to stigma is called pollination. Plants receive their nutrients mainly from soil. Movements of cell against concentration gradient is called active transport. The world's longest land border between the two countries is called border between US and Canada. The world's largest island is Greenland. Which country is the largest archipelagic country in the world? That is Indonesia. Indonesia is a country with around 13,000 islands. The most dispersed country in the world is Maldives. The Maldives is spread over 90,000 kilometers square. Maldives, a country in Asia, consists of around 1192 islands.
Which country is also called the land of midnight sun, that is called Norway? Which country is also called rainbow nations, that is South Africa? Netherlands literally means lower countries. While UK has earned record revenue this year, it still lags well behind it in exports. Anna and Tanya went shopping, but they could not find anything they liked. D is the right option. Nuclear energy is too dangerous to be used widely, that is prepositions. If I have money, I will purchase it tomorrow. Canon had such unique qualities that it was used widely in ancient times. A is the right option. She succeeded by working hard. Catherine made her children do some chores on Sunday. I enjoyed playing tennis. Most of the guests arrived in buses. The departmental store is open from 8 to 7. He is looking for accommodation, either in flat or shared house. You can go neither by train nor by bus. Before designing a public park that consider the public. When she was younger, she walked 5 kilometers a day. The house is large but is quite old-fashioned. We need to find another method to solve this problem. C is a right option. When 36 is 0.36 is written in simplest fraction form, the sum of numerator and denominator is जब इसकी फ्रैक्शन ओपन करेंगे तो इसमें 9/25 आ जाएगा, और जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 34 आंसर. बी इज राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट? ऑप्शन बी 15/19. 12.1212 plus 17.0005 minus 9.1102 is 20.0115. That is mathematical questions. 0.002 multiplied by 0.5, answer is 0.001. A batsman score, that is repetitive questions. एक दो दफ़ा पेपर्स में repetitive questions भी आ जाते होते हैं. 65% of a number is 21 less than 4/5 of that number. What is that number? The number is 65% है किसी भी नंबर का, और वो 4/5 21 is number is 21 less than 4/5 of that number. Let the number be x. हम suppose करते हैं कि number x है. Then 4 multiplied by x, 4/5 है ना, 4 multiplied by x divided by 5. 65% of x equals 21. और ये कैलकुलेशन है, इनको माइनस कर लेंगे 21 से, और 140 is the right answer. If a equal to x% of y and b equal to y% of x, then which of the following is true? a equals to b. x% और y% जो है वो x% जो y का है, y% x का है. a equals to b. Two coins are tossed in simultaneously. The probability of getting at the most one head is 1/4. If in a coin we have two sides, heads and tails, so we will have 4 sides of 2 coins. For getting one hand, the probability is 1/4. A bag contains 19 red ball, 37 blue ball and 27 green ball. If a ball is picked up from this bag at random, what is the probability of picking of blue ball? 19, 37 एंड 27 को प्लस कर लेंगे, उसके बाद जो भी आया उसको डिवाइड कर लेंगे. ब्लू बॉल थी 37, तो प्रोबेबिलिटी जो है 37/3 बन जाएगी. Francis has 18 eggs, out of which 12 eggs were sold at 10% less than the cost price. At what markup
should he sell the remaining eggs to cover his losses? D option 20%. The ratio between the sold egg and remaining egg is 2:1. To cover the loss which we must sell the remaining egg 20% more than the actual price. By selling a table of for 350 instead of 400, loss percent increased by 5%. The cost price of table is, this is the C 1000, and the method is difference between the loss price and 50 है, जो उन दोनों में डिफरेंस है. एज सेड ऑफ 50 रुपीज़ 5% लॉस, तो 5% का जो 10% बनता है, और 10 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ 1000. If a man were to sell his share for 720, he would lose 25%. To gain 25% he should sell it for, अगर वो 720 पे सेल करता है तो वो उसका 75% होगा. लेकिन अगर वो 1000 पे सेल करता है तो वो उससे ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा. अगर वो यानी कि 100 पे सेल कर रहा है तो 75% पे सेल नहीं कर रहा, 100 पे सेल कर रहा है, 100% पे सेल कर रहा है, दैट इज़ 1200. The cost price of 20 article is the same as the selling price of X articles. If the profit is 25%, then the value of X is, this is the proper procedure. Let CP, cost price of each article is X. So selling price of article is 20 को X से माइनस कर देंगे और 25 आ जाएगा. 2000 को माइनस करेंगे 100 के साथ, 25 X के साथ, और राइट आंसर हमारा 16 है. A father said to his son, I was as old as you are at the present at the time of your birth. If the father's age is 38 years now, the son's age 5 years back was, sons की 5 साल पहले की एज क्या थी? That is 14 years. A is 2 years older than B, who is twice as old as C. If the total of the ages A, B and C be 27, the how old is B? B is 10-year old. Which of the following section define it extends to the whole of Pakistan and applied to all citizens of Pakistan and public servants, whatever they may be? The section is A, section 1 of 2. Current federal investigation agency is working under FIA Act 1974. Which of the following section define FIA Act 1974? It shall come to force at once. Section 1 of 3. ये FIA का 2018 का पास्ट पेपर था जो कि मैंने आप सबके साथ शेयर किया. इनमें से 10% क्वेश्चन जो है वो अगले 5 साल तक हर पेपर में सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन में आता रहेगा. सो इसको फॉलो करें. उसके अलावा ये बहुत सारे दूसरे पेपर्स में भी काम आ सकते हैं ये सारे क्वेश्चंस. थैंक यू.